गुड इवनिंग एंड ओम शांति टू एवरीवन। आज पावर टॉक के इस फोर्थ सेशन में हम सबका स्वागत है और टॉपिक है आज का साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, साइंस में अच्छी पकड़ रखने वाले और साथ साथ एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व। हमारे साथ में हैं आज डॉक्टर प्रशांत काकोड़े जी, जो कैम्ब्रिज से हमारे साथ जुड़े हैं। कैम्ब्रिज एक शहर है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के एक शहर कैम्ब्रिज से आप जुड़े हैं। लगभग 30 वर्षों से आप ब्रह्मा कुमारीज के साथ में हैं। ब्रह्मा कुमारीज के बहुत सी चीजों में आपकी टीचिंग्स भी करते हैं और आप एक डॉक्टर भी हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। आप जानते हैं कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या होते हैं? बच्चे जानते हैं? आप ईएनटी सर्जन भी हैं। स्पेशलिस्ट का मतलब आप सर्जन भी हैं। आपने बहुत सारे ऑपरेशंस भी शायद अपनी जिंदगी में किए होंगे ईएनटी के। और इसके साथ साथ दुनिया के 80 देशों में, मोर देन 80 कंट्रीज यू हैव विजिटेड, नॉट ओनली विजिटेड बल्कि आपने वहां पे अपने सेशंस भी दुनिया भर में दिए हैं। और जब दुनिया भर में दिए हैं तो साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थान, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO में भी आपके सेशंस हुए हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व आज हमारे साथ है। ऐसे व्यक्तित्व का साथ होना जीवन में अनेकों प्रश्नों का समाधान कर देना है। ऐसी महान व्यक्तित्व को आज आमंत्रित हम अपने साथ करते हैं, डॉक्टर प्रशांत काकोड़े जी को। तो सब लोग जरा एक हाथ की ताली या अपने रिएक्शंस दे करके स्वागत करेंगे डॉक्टर प्रशांत काकोड़े जी का, है ना? बहुत बड़ी बात है ना, 80 देशों में सेशन देना। और ये इंग्लैंड में कैम्ब्रिज शहर की जितनी भी सेवाएं ब्रह्मा कुमारी इसकी होती हैं, आप उसको देखते भी हैं, आप उसको संभालते भी हैं। तो ऐसी महान पर्सनालिटी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम। और आज का टॉपिक है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ओवर टू यू डॉक्टर प्रशांत काकोड़े। You can hear me now? यस, And is the sound clear? sound is clear, but a little bit louder will be better. Sound is clear. And you want me in Hindi or English? It's your choice, but mix will be better. Mix Hindi. Okay, sure. That's one. So right now we are in Gyam Sarovar, and this is a studio in Gyam Sarovar, and so Shailesh is helping us in this connect, technology and connections. Thank you. So we're very happy to bring in Hindi, language. And in the last year, I had exposure to speaking Hindi opportunities, so there will be a chance. But subject is such, English will be easier to express the subject of science. First, let us take the subject of spirituality. Some few principles in spirituality. First principle is that what we are seeing here, this world is not our world. It's a foreign world. And we are just passing through. We are musafir. We are guests here. This is the first principle of spirituality. This is not ours. And I also want to ask you, is it an option for me to use whiteboard in this Zoom package? Do you have the option of whiteboard? Maybe not, but if you think I can use the whiteboard, Zoom whiteboard, let me know. हाँ, आप यूज कर सकते हैं। और टेक्निकल टीम, गौरव जी विल हेल्प। गौरव भाई आप यहाँ हैं या बुरहान भाई आप यहाँ हैं, तो एक बार व्हाइट बोर्ड यूज करना चाहेंगे डॉक्टर प्रशांत, तो आप हेल्प करेंगे।
Zoom whiteboard. Zoom whiteboard, yes. At the moment, it doesn't appear like that, but if there is an option, let me know. So this is like a big area. We are guests, we are musafirs. Do not have the option of whiteboard here in this room at the moment. Is there an option? No, there is no option of Zoom whiteboard at the moment. We do not have the option. Yeah, sure. So if there is an option, let me know but we can manage without it. So this is this understanding that we are guests. It is not new. The poets are saying this, and prophets are saying this. Almost all religions, they say we are guests, and that's why we said it is a spiritual principle. But the experience of it, then you get results. To be a guest necessarily means nothing of here can belong to me. And a guest doesn't come and start collecting things and claiming things. Guest is always very aware of his exit. Then he's a guest. So here we have to ask ourselves, do I feel I own anything here? This is the first question that comes. Do I feel anyone else belongs to me? And but the truth is we have forgotten. We have forgotten even our exit. Superficially, we might know that there is a death, but at a practical level, we operate as if there is no exit. We are going to be here forever, and this is our world. That is like a blatant agyan, confusion with which we operate. But that is where we can see it is like a science just means you are thinking in a rational way. Bhakti, you can just believe in anything, and then it is, that is like a belief or faith. But here we need a little bit of rational thinking, and the science has no problem with it. So if we are understanding very clearly that there is a guaranteed exit, and we are guests here, we are bringing in rational thinking. And since we are guests, I own nothing here. This is our attitude. Now, what happens if I don't see myself as a guest? I feel this is my world. What happens? Do you want to tell? Are you free to speak? Are you free to interact? If you are free, you can share. If I say I'm not a guest, this is my kings and this is my house, I built it, and this is my gold because I paid for it, and they are my people, they are born in my family. This is mine. So what happens with that attitude? What is there any problem with it? What is the caution about this attitude? I'm not a guest. I am grahasti. Not a trustee. I am a grahasti. So with this attitude, what happens? What really happens is the mindset of a victim. Because subconsciously and consciously, you feel you are going to lose everything. Everyone on this planet leads a life of a failure. They work, collect things, they achieve things, and then they die, and they know they are going to lose it all. So the life of everyone at present time is the life of a failure, regardless of their achievement. Subconsciously, their mindset and the mentality is of the victim. Right, okay. Yeah, okay. Sure. So,
the request is speak in Hindi. Sure. Let me check this. Confirm. I'm just trying to see this. So अब तक डिस्कशन में जो बात की, यही एसेंस यही था कि हम यहाँ मुसाफिर हैं, मेहमान है। ये जो दुनिया जो है, सारी स्थूल दुनिया जो है, वो पराई दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है। और हमारा यहाँ आने का टाइम है, जाने का भी टाइम है। यही, this is the one principle of spirituality. Another principle of spirituality is that we are immortal. हम अमर है, सभी। एक स्पिरिचुअलिटी यही बताती है। आप बता सकते हैं रैशनल आर्गुमेंट व्हाई वी आर इमॉर्टल। हम कह सकते हैं एक जैसे श्रद्धा के तरफ, सभी अमर है, अमर कथा हम सुन रहे हैं, लेकिन कुछ रैशनल ग्राउंड है। कैन यू think of some rational argument why we are immortal? Is there just a belief? Just because someone tells us we are immortal? We see everybody dying around us. So, I will here speak in English and then I will tell the essence in Hindi. In our instinct, if you see this human race, humans and animals, no one wants to die. And even as a doctor, those who are from the medical background, you have seen people at any age, they may even say, I want to die, I want to die. But when actually the time comes to die, they don't want to die. Everyone wants to survive. Humans and animals. And what it tells us that they want to be immortal. Even those who attempt suicide, they take a step towards suicide. They swallow something or do something, jump. And if they have not died, their next thought is how to survive. And they struggle how to survive. So it tells us that our deep instinct is to be immortal. This applies to humans and animals. The big question, where do these instincts come from? Is it possible for someone, to say, I want a mango, if he has never seen a mango before, never tasted a mango? Is it possible for him to say that? In the same way here, if we deeply feel we want, to be immortal, where does that instinct come from? We have experienced it before. And if we have experienced it, it means we have experienced it at another level. As was said, this is a parai dunya. A parai dunya hai, foreign world. And in the foreign world, we are passing through. We can't be immortal here. There is a guaranteed exit. But in our world, that world is Amarpuri. That world is eternal place. And we are immortal there. We experienced immortality. Just that we are looking for it in a wrong place. And that's why the whole disappointment and life of a failure.
Language is okay. Do you want to add anything? I would like to hear some feedback. And Hindi is better. Subject. Voice is clearly audible and it is understandable also. Kindly increase the amount of Hindi. थोड़ा थोड़ा हिंदी बढ़ा दीजिए. Okay, yes. But it's okay, even mix is okay. Mix is okay, yes. So यही कहा था कि हमारा जो गहरा इंस्टिंक्ट है, कोई इंस्टिंक्ट हिंदी में और एक शब्द होगा, वो इंस्टिंक्ट हमें बताता है कि हमें अमर रहना है. कोई किसी को भी मृत्यु अच्छा नहीं लगता, मतलब पसंद नहीं है, और डेस्परेट टू सर्वाइव. सो हम यही आर्गुमेंट डालते थे कि ये इंस्टिंक्ट है, इसका कारण हम है ही अमर. हमारा शुरुआत है, वी आर ऑल इमॉर्टल, अमर, और यहाँ मुसाफिर, टेम्पररली पासिंग थ्रू दिस वर्ल्ड. बट और एक सिद्धांत, प्रिंसिपल इन स्पिरिचुअलिटी, अंतमते सोगते. Our last thoughts leads us to our destination. हमारा अंतिम संकल्प है, उसके आधार पर हमारी फ्यूचर depends. Future depends on the last thought. This understanding is there in various traditions. People say this, and even when we speak of this, we are using this bhakti claim, antimate sogate. Last thought leads us to our destination. Now, one very interesting research done by someone called Ian Stevenson, एक psychiatrist, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका का, और उसके पास एक माँ ने एक बच्चा, 4 साल का बच्चा उसको लाया, और इस बच्चे को पिछले जन्म की याद है. तो माँ को ये जैसे मूंज थी, ये क्या बोल रहा है. इयन स्टीवनसन ने इस बच्चे से जितना इंफॉर्मेशन मिल सकता है उतना लिया, और उस आधार पर वो जो जिसका मृत्यु हुआ था, वो फैमिली को लोकेट किया, एड्रेस, बिकॉज ये बच्चा बहुत डिटेल्स बताता था. इस आधार पर he located the family where that person had died. और ये मालूम पड़ा कि ये जो बच्चा बोल रहा था, वो 40 फैक्ट, 40 फैक्ट्स मैच्ड विद द रियलिटी. उस मनुष्य के लाइफ में जो कुछ हुआ था, ये बच्चा बोल रहा था, 40 फैक्ट्स मैच्ड विद रियलिटी. He published it in the Psychiatry Journal of America. This was in 1960s. He got lots of interest, he got funds and grants. More he did research, more he published, he got more grants. And now they got a department within Virginia. That department is called Division for Personality Studies. And within that department, they have got 24,000 cases where they remember another life, the children. But these are good cases. They have studied thoroughly and good cases. But very interesting information for us. In these cases, he notices that in the next life, they have injuries based on the injury in the earlier life. His one book is called Birth Defects and Reincarnation. So the children not only remember other life, but in this life, they have got injuries. As an example, one boy lost fingers in an accident at the time of death.
And in the next body, he is born without those fingers. In one case in Burma, one man was hanged. He was a criminal, so he was caught, he was hanged. And in this next life, he is born with a very narrow neck. So most of the life, he cannot even eat properly. He can just have liquid foods. He is very narrow mandible and narrow neck. One policeman in Chicago, he was shot by the gangsters, he died. And one girl is born in Chicago, and this girl has got the hole in the heart. But this girl remembers the life of the policeman. So it is the same Atma, in this girl. And so we are seeing a very interesting thing that this research by Ian Stevenson and his books. He has written many books. Name is Ian Stevenson. That shows us the existence of consciousness that is independent of the body. That we are talking about Musafir, and we are talking about we are Mehman, and we are immortal. We are talking about this language. Who is immortal and who is Mehman? We are getting this very clear insight that the real person is the conscious, invisible entity. In other words, the soul. Soul is the one who is traveling, passing through this. This observation by Ian Stevenson is very, very important for science and the medical world. And it is important for the science and the medical world because this is like some scientists, they say that if Ian Stevenson is right, we all are wrong. In other words, we have to think fresh. Where does evolution fit in? Where does Big Bang fit in? If the consciousness already exists and it is not creation of the body, it exists at another level, independent existence. So this brings the revolution. Some scientists make the statement that science needs to change. Many within the science world, and some of them are Nobel Prize winners. They are making the statement: science needs to change. Science needs to be revamped. And some say it will happen sooner than we thought. In other words, the science that is taught in schools and colleges and the science that we know as science, this is incomplete science. We are not incorporating within this science the bigger map reality. There are many, many cases. Like, for example, in out-of-body experiences, you might have heard of the people who have out-of-body experience. 6% of the population on this planet have out-of-body experiences. We are talking about some 60 million people on this planet have out-of-body experience. So when they have this experience, what happens? They see themselves independent from the body. They are looking at the body from outside. And there are people who can leave the body at will and see the body. They can go to another place and come and tell you what they saw. So all kinds of these experiments are going on and observations are there. And science says we can't use it. We can't make use of all this information because the science that is used at the present time is within those limits. And that's why the movement that science needs to be revamped. We need to expand the structure of science. And when we were to see, then we can promise truth.
with the incomplete science, we cannot give the world the truth. Yes, and I like to hear some. I'm talking here, but I want some feedback. If the sound is okay, but if the concepts, any questions you want to ask. Om Shanti, sir. Om Shanti, sir. Sir, I am a student of NEET and I am also like to be a doctor. So that जो अभी आपने बोला कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मतलब कि ये मतलब बहुत बार ऐसा फील होता है मतलब हम लोग रात को मतलब सोते हैं तब सब कॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ चलता रहता है या फिर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा लगता है कि रात को कहीं और है और हम लोग जब ऐसे देखते हैं तो बॉडी मतलब ऐसे सो रही है तो ये होता है या नहीं होता सच में होता है या नहीं होता वो नहीं पता मेरे को Right. The sound is not heard that well. Can others hear the sound? मैं वापस बोलता हूँ कोई बात नहीं सर जैसे कि हम लोग मतलब ये आपने जो भी बोला कि मतलब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है बहुत बार तो जैसे कि हम मैं मतलब बहुत बार रात को कभी सोते हैं तो मैं अभी करंट हॉस्टल में हूँ तो बहुत बार लगता है कि मैं मतलब बॉडी के अंदर हूँ ही नहीं मैं बाहर हूँ ऐसे तो बहुत बार बॉडी दिखती है सामने तो ये सही होता है या गलत होता है ऐसे मेरे को Yeah. लगा ये कोई ड्रीम होगा या फिर ऐसे होगा ये मेरे को नहीं पता था इसलिए Yeah. Miss, maybe if you type in the essence in English, I will be ओके able to. ओके सर His question is, Dhruv, sometimes, many times he feels that he is out of body. Whether it is real or not, he does not know. But he sometimes or many times he feels that he is out of body. Sure. It is possible, but it can be, worth visiting medical people, and they can sort of find out. It's just out of curiosity. It doesn't make a big difference. But in these cases where the people have out of body experiences, they they can clearly see themselves near the ceiling, near the not separate from the body. Sometimes body is on bicycle and they see the person riding the bicycle from outside. In one case, this is a near-death experience, so slightly different. This is one doctor by name Raymond Moody. He was a cardiologist, and his patient had some serious cardiac failure, and he was unconscious for a while. And after resuscitation, he came back to consciousness. And he started saying, I was conscious. I was watching you all doing things. And the cardiologist tried to ignore it because it doesn't make sense, because he knew he was unconscious. Then the patient said, I left this hospital. I went above the roof of the hospital. And on the roof of your hospital, there is one blue shoe, just one shoe, on the roof of the hospital. And there are no stairs to the roof. So Raymond Moody got interested in this. He said, this patient is claiming that he saw what is on the roof, so we can verify it. So he informed the television people, told them about this case, and they came with the camera. They went to the roof, and they found one blue shoe on the roof of the hospital. Immediately, they realized that his experience was real. It is not just some imagination, but objectively verified that his information about the blue shoe, it is a very good evidence that he was there to experience it.
If you go into YouTube and if you type the words Raymond Moody and blue shoe or something like that, you might be able to see that video where they find cameramen are going on the roof and they find a blue shoe. Raymond Moody himself got interested. Until then, he was ignoring such kind of talk. He got interested in this, and he has published books on the near-death experiences, out-of-body experiences, and that is a very big movement in a sense. Many other doctors are interested in this area. Another name we need to know in this area is name of Professor Eccles. Professor Eccles is a brain specialist. He was, and he got Nobel Prize for medicine and from Australia. And he says the soul is using the brain. And it is various, and this is what many other scientists are also saying. Once, if the soul does exist, it answers many, many mysteries that exist in the world, including the mysteries at the level of the brain and neurophysiology. If the soul exists, it solves it all. But the science had the question, is there evidence about the soul? It is like a big jump to say the soul exists and it solves it. It is a bit like someone says, God, God exists, God will do things. Then it becomes a religion and it is not science. But if science brings the evidence about the soul, it has power. It has within it are answers to the riddles of the brain, but riddles of our life also. The scientists are making this statement. And what Ian Stevenson and these different people are showing, these out-of-body experiences, these cases, near-death experiences, that there is a consciousness that exists independent of the body. In these cases, the brain showed no electrical activity. Some of these cases, brain was dead, and person was given a death certificate also. And then he comes back, and he says what he experienced during that time. So all of that tells us that there is an existence of consciousness independent of the body, and once we understand this from science, it is a question of time before science brings it in the books also, and it will be great news if that happens. But for us, we may have to go not with the outdated science or the past science. We may have to think of the new science. Or we need to go for the truth, not wait for the science and their departments, they agree, and then we come to the truth. This world gives hints in different ways. Like as a doctor, a patient comes. Patient may speak something also, but the patient, the way he sits there, the way he talks, the way he coughs, it all gives you hints. And based upon the hint, you have to come to a quick conclusion and diagnosis, and you have to give the treatment. In the same way, life is like this, gives you hints. And based on the hints, you have to come to the conclusion. And here for us, there are enough hints. Hints are there in it that we are more than the body. Ian Stevenson, we were talking about 24,000 cases, good cases, that whole department of parapsychologists working all over the world. After all this evidence on reincarnation, and we don't incorporate this understanding in our notion, then it is like we are not making use of
of the knowledge and the hints. It is much more than a hint here. But one case is enough for me to question our ordinary attitude. But it has a huge benefit for the society. We said it solves the riddles of neurology. In the neurology, you get this word mystery, but it answers that. But it also has a huge answer to the human sociology, our society. If people are fighting wars and people are sad in different ways, people are addicts, for different reasons. What's the reason? What's the one reason why people fight wars and people have health issues and mental health issues? People are addicts, and these are all social issues. What is the one reason you think? Is there one cause of all this? A whole lot, 100% of our social issues. There is one cause. What do you think is the cause? One word answer. They want the world in their hands. Yeah, the real reason is they are insecure. Yes. They see themselves as victims. And when I approach this unpredictable world, this world we are dealing with, physical world, is unpredictable. Things can change next second. This body can die. There can be earthquake. And if this is my only world, I lead a life as a victim. Mentality is a victim. And what happens with victims? They all the time have to look at the dangers. Their active focus is on the looking for the dangers. So they end up looking at the negative things and they ignore everything else. Their focus is all the time on the dangers. This is the life of human mind. This is the kind of life we lead. And when we are in that victim personality, there is of course the reason for war. Right now, Russia and the war that is going on, the president of Russia, he says, I am feeling insecure with NATO. But same thing will happen in this country. The more you feel insecure with the neighbors and all, then you spend more on ammunition and more on military. But sooner or later, people then end up fighting war. But at a personal level and at a bigger level, global level, our reasons for sad, bad, and mad. The reasons for this is our insecurity, the victim personality. And this present positioning, everyone feels he is a victim. And we understand we are more than the body. And our existence is there, independent of the body. And at this level, things are going to go. Body is going to go, but you are immortal. You understand this. Then you discover the mind where there is absolute security. You are a musafir, you are a guest. Things are going to change here, things are going to go, but you don't lose a single atom. You are never a victim, not even the slightest. And you are never a beggar. You need nothing from this level. You are never a beggar, never a victim. In the ordinary personality, they constantly want something at this level. Regardless of their position, and they got gold, but they still want more because they are victims. So internally they feel they are beggars and they are victims. When they need something, it may be someone should love me, someone should give me company, some kind of a need going on.
when I see the bigger map, you realize never a victim. What an amazing thing to know. That things, people can say things, people can break things, and this body is going to die, but not a victim. You remain the same. Your world remains safe. And this physical world cannot harm you even the slightest. That is the foundation of noble personality. You remove victim and remove beggar, what remains is noble, shrestha, divya. These words need to be used to describe that perspective from there. And this experience, we can come in this experience for 1 minute, just see this bigger map, see the physical world as a story world, and the invisible Musafir is passing through this. Invisible Musafir, he has his world beyond. That's why he is a guest here. His world is eternal world. That is what spirituality is. His world, he knows about it. In the past, it may be just a belief, and that belief is not enough for us to come in the nishchay. And that shraddha is not enough for spirituality. There should be nishchay, not faith, not some concept, but you should be sure. Science helps us to come to that nishchay. Some whatever that is spoken so far is a little hints we said. That is giving us the nishchay about this spiritual model. And once you start playing with it, even for 1 minute you play with it, you discover for that 1 minute, no victim within you and no beggar within you. Instantly you experience that noble personality. What will be the first sign of the noble personality? If you answer this, you will get a prize. What will be the first sign of the noble personality? Science-based, so some evidence, evidence-based. You can tell. Shibika can speak. Okay, I will tell you one thing. One quantum physicist. Tara want to say something. Sure, please. Tara? Om Shanti. Good evening, everyone. Good evening, Dr. Prashant. Doctor, I have a question related to the information you gave earlier, that the last thought that you have in your life leads to your next reincarnation. I wonder what happens with these children who are born with special able conditions, who are not completely, let's say, normal. They have intellectual deficiencies. They have global development delays. Is that related to their previous life as well? Sure. And there are many factors coming from the science. Everything that happens is multifactorial. Understand? Yes. So, like the person may have injuries on the body of different kinds. People are born with developmental defects, so they are not connected with the past life. But in some cases, we see the direct connection from the past life. But I will share with you in that connection, the Antamati Sogati, last thought. We saw last thought is I lost the fingers. And in the next life, he is born without the fingers. Because last thought, last impression he creates
when he's leaving the body, I'm without the fingers. And that impression goes with him and creates the reality in the next life. Last thought, he has got that neck, he was, one person was hanged. Last thought is that his neck is narrow. That impression goes with him and creates the reality in the next life. Now let us see our present world. Let us say someone has got lots of ego based upon his wealth. This is my money, my gold. What will be his last thought? You want to tell? All his life is very happy. Oh, look at my gold and look at my money. This is all mine. What will be last thought? Anyone can answer. Those who are able to speak. Last thought will be, I lose it all. Even a minute earlier, he may have feeling, oh, look at this, I got so much. But last impression is, I am going that way and the gold is staying behind. So the feeling is, I am a loser. I am unlucky. I'm unfortunate. I'm empty. This becomes the last impression. And that impression goes with him. And that psychic impression will influence the reality in the future, wherever he's born. Let us say a person has lots of attachment to his children. My children, I happy, my children. The last impression will be, I lose my children. I'm without children. Wherever the attachment is to the husband, the last impression will be, I'm without my husband. I'm losing my companion. And these psychic impressions influence your future. They will create the reality of the person, coming from the spiritual, position. We can sort of speculate how the social life is influenced by this last impression. Okay, let us see one example. A yogi, what is his last impression? He says he's a musafir. He's a soul. And he says he doesn't own a single atom here. He doesn't own a single person. He doesn't own anyone, anything here. He's just passing through. He doesn't even own the body. So the last impression is that he has got nothing to lose. During the life also he feels that, and the last moment also he feels that. He got nothing to lose. He's full. And he is complete. He's lucky. And this impression goes with him. More he's connected to his reality beyond, so he is aware of his life with the supreme friend, supreme companion. He knows, having that intoxication, that his friend, God is his friend, and God is his companion, and God is his father, God is his mother. This is what yogi life is. And this is the impression he will carry with him at the last moment. And because it is not based on the drama, he doesn't feel he's losing it. He's coming even closer to God, and he's coming closer to his eternal truth. So how will it affect the future in a yogi? If he's seeing God as his friend, and this is the impression with which he dies, he will have God-like friends in his future. If he feels God is his father, with that impression, with that joy, he leaves the body, he will be born with God-like parents, and he will be born with God-like companions. And what we are talking about in the birth of Krishna.
You will be you will be in the life of Krishna, where everyone around you, they are all godlike beings, and interaction is of fullness and being lucky and complete, nothing missing, nothing lacking. This is drama level. So we are seeing how the last impressions, create their reality in the future, and how we can, we hear this in the Murli, the message, forget this world, great, don't think about body, don't think about relations, be yogi. Yogi means let your all your world is not this world. This is the foreign world. And more we Sir, spend. Yeah. sir, you told that nothing is our in this. We are a musafir. So sometimes we are very possessive for our families and loved ones. So what we are do for that? Yeah. If someone can repeat the last part of what was said. If Sir, someone else can repeat, because the microphone. If you heard. Dhruv, uh, will you repeat? सर मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग मतलब बहुत बार सर ने जैसे बोला कि हम लोग मुसाफिर है मतलब जो हम लोग को मतलब हम लोग बहुत बार घर वालों से फ्रेंड से या फिर जो हमको पसंद है उससे बहुत बार अटैच हो जाते हैं अगर वो पर्सन कुछ भी मतलब थोड़ा सा ही गलत करे हमारे साथ तो हम लोग बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं तो सर ने जैसे कि बोला बी अ योगिक पर्सन तो वो कैसे बने हम लोग Dhruv is telling how we can become a yogi, because we get hurt from person, our family members. If somebody says to us, we get hurt. So how can we become a yogi? That you are saying that we shouldn't be hurt, but we are getting hurt. So how Yeah. can we become a yogi? Because we are the musafir and we being attached. As per the musafir, we should not be attached, but we are getting attached. Yeah. So for even 1 minute, to create this new way of looking at things completely. And in this new thinking, you are understanding that what is happening here is a story. And Prashant is part of the story. And many things happen around Prashant, and people will say things and people will break things. That is happening in the story. Musafir is the invisible conscious soul. He is the Musafir, invisible traveler. And he is having a different world, a different life. He is not hurt by this world, by the story. In the story, there are so many things going on. For 1 minute, we have the option to see in this way. It is a new start. Old habit is you go back into the old thinking, seeing yourself in the story. Me, mine, that is had ka mai and had ka mai. That is the old consciousness. But that is fine. We are seeing in a new perspective. And that the invisible Musafir is seeing things. And he is safe. He is secure. What others say, what others they do, that is happening in the story. And story doesn't harm the Musafir. And for 1 minute you are doing this, you are starting a new habit. And every time you are coming back to that practice, that will continue to become stronger. And that is the way to grow in the new consciousness. Did I answer your question?
all habits, good habits, bad habits start somewhere. We are starting a new habit here, soul conscious habit. Yes, sir. Hmm. Thank you, sir. Yeah, pleasure. Okay. Um, can we take 1 or 2 question or 1 or 2 minute meditation? We can conclude with this that by 1 or 2 minute either meditation or by 1 or 2 question. We can do both. A question would be nice. Let us hear the question. Okay. Anyone can ask one question. Please raise your hand if anyone is having some question. Krapanksha Sahu is having one question. How to live without attachments? How to live without attachments? The English word attachment is, not the best word to describe this. What we want is lead a life without dependency. You are not tying yourself to things. That is what we are talking about. Bandhan Mukt. And life, like right now, I'm in this room. I'm using many things. I'm using this microphone here. I'm using the chair and camera. I'm using this. But if it is not there and it doesn't, I'm free. I'm free to come. I'm free to go. If it is not working, that is also okay. We try our best to get it all best, but internally there is no bondage. There is no bandhan. There is no dependency. Because I'm a guest here, and I got another world. In the same way, we are guests on this planet. This body, it is working right now. It may not be working. It may be not having some problem. That is the body. The Musafir, he says, his world is separate. He doesn't come into any bondage. Deep level, he is not dependent. एक क्वेश्चन आया है, नोबल पर्सनालिटी कौन है? ये मिस हुआ, इसका आंसर चाहिए. Who is the noble personality? Yeah, that's so good. Thank you for coming back to that point. When we are in we were talking about this quantum physicist by name Fred Alan Wolf. He is from San Francisco. And those in the world of quantum physics, they know this name. He is like a professor, an authority in quantum physics. And he attends some of our retreats, in Europe and in America. And one statement he makes, a big miracle is right in front of our nose. What is meaning? This world here. What we are seeing, clouds and sky and the stones and water, fog. This is like a miracle. This physical universe is like a miracle right in front of our nose. And is it not a miracle? I feel it is a miracle. Everything is so wonderful. And that the body is there, and it is another miracle. And if you see, as it was said, plant or stone or creature, animal, we are dealing with the world that is extraordinary. But if the victim is given this miracle, the victim is not free to appreciate a miracle. Victim is looking for the dangers. He misses the whole fun, and he is seeing what is wrong in somewhere, and in what way things are not right. He misses the fun, misses the extraordinary gift that is given to us. When you remove the victim, remove the beggar, when the noble personality comes in, he feels this moment is a gift. The next moment is another gift. And this body is a gift. And this microphone is another gift. And your presence here is a gift. If he feels
the life is an extraordinary, wonderful journey, as it is. He doesn't say I have to go specially to some place to experience it. As it is. Fog is nice, rain is nice, birth is nice, death is nice, and because he is safe, he is noble. He's not a victim. And that's why he can appreciate it in this extraordinary way. And we, as we are emphasizing, we have the option to come in this even for 1 minute at a time. Play with this perspective, 1 minute. And if someone plays with this perspective, even 1 minute, 4 times, it can cure his mental health problems, because it brings in such a positive perspective inside that it can wipe out all the other negative things he accumulates during the day. But it will create a habit. What is the life? What is a great life? Someone has got lots of gold, but mind is of the victim, is one thing. And other is, he says, not one atom belongs to me, but he feels every moment is a gift and everything is a wonder. And that big miracle is in front of our nose. Worth remembering this sentence, that a big miracle is in front of our nose. That itself is like a cure for our society, actually. Wonderful thoughts, wonderful. तो आज हमने डॉक्टर प्रशांत काकोड़े के साथ अपनी साइंस और स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़े। हमने जाना कि इस दुनिया में हम मुसाफिर हैं, आए हैं। एक कण भी इसका हमारे से बिलोंग नहीं करता। यदि ये मेंटालिटी हमारे पास आ जाती है कि एक भी एटम हमारा नहीं है, हम तो मुसाफिर हैं और हर चीज जो मिली है एज ए गिफ्ट है हमारे लिए। हम अविनाशी हैं, वी आर द इमॉर्टल पर्सनालिटीज। दूसरा, अंतमति सुगति का जो आपने राज समझाया, द सीक्रेट बिहाइंड ऑफ अंतमति सुगति, वंडरफुल। और साथ ही साथ आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस पे जो चीजें क्लियर की, रेमंड मूडीज और दूसरे साइंटिस्ट के बारे में हमें बताया। एंड साइंस नीड टू बी रिवैम्प्ड। व्हाट यू टोल्ड इज वंडरफुली वेल कि दुनिया अदरवाइज सैड, मैड और बैड, वर्ल्ड विल बी लाइक दिस। वंडरफुल। तो हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से वी थैंक प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत काकोड़े जी, विद द थैंक्स। और हम सब लोग भी एक रिएक्शन के साथ में सर का थैंक्स करेंगे। Yeah, Thank it's you so very much. nice to meet the family and appreciate, in a few sentences you summarized the whole hour. Great. और वंडरफुल। आज के साथ साथ हमने आज साइंस के बारे में जाना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बारे में भी जान लें। आर यू रेडी फॉर मैथमेटिक्स? वैदिक मैथमेटिक्स में आज हमारे साथ लेकर के आ रहे हैं डॉक्टर अजय स्वर्णकार। मैं हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा स्वर्णकार जी को होस्ट बनाए और वो हमारे पास वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ और फास्ट कैलकुलेशन फार्मूलाज लेकर के आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि 48 को 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, और आपने बहुत जल्दी करके बताया था। और एक बार फिर हमारे साथ में है अजय स्वर्णकार जी। वी वेलकम यू अजय स्वर्णकार जी। थैंक यू सर। अजय जी, आप अपना 2 डिवाइस हैं, एक डिवाइस को म्यूट कर दीजिए और अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए, और साथ ही साथ हम आपको देखना और सुनना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन देने की जरूरत तो नहीं है अजय सर का। लास्ट टाइम हमारे साथ में जुड़े थे, वैदिक मैथमेटिक्स से हैं, और मुझे लगता है लगभग लगभग हजारों स्टूडेंट्स को ये पढ़ा चुके हैं। शायद उसका नंबर 50,000 से 1 लाख के बीच में तो जरूर होगा, क्योंकि मैंने इनको खुद को पढ़ाते हुए सैकड़ों बार देखा है।
he is a wonderful student, wonderful faculty of specifically Vedic mathematics. और अदर देन वैदिक मैथमेटिक्स पूरा एप्टीट्यूड ये कमाल के टीचर हैं एप्टीट्यूड के, जिसमें क्वांट, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग का कमांड तो जोरदार है इनका। आप में से कई लोग होंगे जो बैंक पीओ की या फिर जेई की या कई तरह की तैयारियां जो कर रहे होंगे, उन तैयारियों में इनके टिप्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। हाँ, अजय स्वर्णकार जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? Yes, sir, you are audible. Please wait for a minute. आप अपनी दो डिवाइस में से एक डिवाइस को म्यूट कीजिए, क्योंकि दो डिवाइस की वॉइस क्लैश कर रही है। अच्छा, पिछली बार मैं भी क्लास में था तो मुझे याद आता है हमने दो तरह के मैथमेटिक्स, दो तरह के मल्टीप्लाई सीखे थे। 26 से 75 के बीच में, 26 से 75 के बीच में यदि कोई नंबर है तो हाउ कैन वी मल्टीप्लाई विदाउट इंक, है ना? थिंक विदाउट इंक ऐसा करके उन्होंने कुछ बताया था कि बिना पेन पेपर और बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल के दो नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करें। पर एक छोटा सा उसमें ट्रिक भी था कि एक से लेकर के 25 तक के 1 to 25 तक का क्या आना जरूरी था? 1 to 25 का क्या बोलते हो उसको, टेबल आनी जरूरी थी 1 to 25। आप में से कितने लोग हैं जिसमें 1 to 25 की टेबल आती है? जरा हाथ करेंगे कितने 1 to 25 आती है ध्रुव जी को? नहीं अच्छा, सुश्रुत तेंदुलकर जी, हाँ, सुश्रुत जी आपको 1 to 25 की टेबल आती है? हाँ आती है सर। जरा 23 into 5 कितना होगा बताएंगे? 23 की टेबल सुनाएंगे? सुश्रुत जी हमारे साथ हैं? थोड़ा हमने रियल टेस्ट तो नहीं ले लिया आपका? आर यू देयर सुश्रुत जी with table of 23? Anyone else with the table of 23? 23 की टेबल किस किस को आती है? अच्छा चलो, गुड अजय जी इवनिंग से पूछते हैं। अजय जी आपको 23 की टेबल आती है? क्योंकि हमारे सारे स्टूडेंट्स को तो किसी को नहीं आती 23 की टेबल। सर, बिल्कुल आती है। अच्छा ठीक है, आती है। हाँ, चलिए आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो ओम शांति सभी को। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन, यस और नो? हाँ, आप ऑडिबल हैं सबको। और चैट ये बॉक्स में करना है, चैट बॉक्स में बिल्कुल रेस्पॉन्ड देना। चैट बॉक्स में नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ है। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 तक तो आती है। ओम शांति, ओम शांति। तो आज का जो सेशन है ना हमारा, वो टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सीखेंगे कुछ नई चीज, थिंक विदाउट इंक। तो आज अपन पेन यूज ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है? ओके, तरनजीत, आकृति, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पिछली बार जो करवाया था ना मैंने, मैं देखूंगा एक बार आप लोगों को याद है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ फटाफट से चैट बॉक्स में, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 48 क्विकली विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस, मोबाइल और कैलकुलेटर, एनीथिंग एल्स? 2304, वेरी गुड, वेरी गुड। नमस्ते, प्रणाम। ठीक है, 2304, वेरी गुड, वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे इसके बाद में हम, है ना? एक और दो और पूछूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे का देखेंगे, ठीक है? अब मुझे बताइए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 57 क्विकली। काफी लोगों ने रेस्पॉन्ड दिया है। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, एक और बताइए, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 64? एक का ही है, वेरी गुड। अंतिम,
आर्यन, अनय, मुस्कान, रिंकू, मतलब आप लोगों को वो 26 से लेकर 75 तक के स्क्वायर कैलकुलेट करने आते हैं, यस ना? तो फिर हम आगे चले। यस, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 26 से 75 अपन कर चुके हैं। अब तो अगली रेंज क्या होनी चाहिए? दैट इज फ्रॉम 76 टू 125। 76 टू 125, ये वाली रेंज जो है ना वो इससे भी ज्यादा, ये उसका ट्रिक, ठीक है। लेकिन आप लोगों को मैंने फर्स्ट टाइम भी एक चीज कही थी कि 1 टू 25 के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वो मैंडेटरी, अगर अपन को मतलब अपन है ना इस ट्रिक से 26 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग कॉपी और पेन। यस, लर्न है, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक आकृति नहीं बोला कि वो लर्न है, बाकी लोग तो चुप। यस 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 यस, ठीक है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। हाँ, तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। अब लेते हैं हम 76 से लेकर 125 तक। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनना ढंग से, बस केवल आप कर लोगे विदाउट यूजिंग कॉपी और पेन, जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही, ठीक है। सपोज करो हमने एक नंबर पिक किया 76 से 125 तक की रेंज का 98। क्या नंबर पिक किया हमने? 98, फाइन। अब करना क्या है, 76 से लेकर 125 तक की रेंज का कोई भी नंबर होगा तो उसको हमको कंपेयर किससे करना है? 100 से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? 100 से। तो जैसे मैंने नंबर पिक कौन सा किया था? 98। 98 100 से कितना कम है बताइए फटाफट से। 98 इज हाउ मच लेस देन 100? 02, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 02 मतलब सीख गए हो आप लोग, मैंने पिछली बार बताया था आपको 02 बोलना है। वेरी गुड वेरी गुड, 02, ठीक है। अब करना क्या है, जितना कम है, जितना कम है 98 100 से, उतना उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दो जिस नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा है। आपसे स्क्वायर किसका पूछा मैंने? 98 का। और 98 100 से कितना कम होता है? 02। तो 98 माइनस 02 कितना होगा बताओ? 98 माइनस 02, 96, वेरी गुड। 96 को अपने दिमाग के ना राइट राइट वाले पार्ट में सेट कर लो कि 96 है, सेट, ठीक है। अब चलते हैं हम 98 100 से कितना कम था? दैट इज 02। 02 कम था, आप लोगों ने सबने बताया मुझे कितना कम था? 02। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 02? 04। इसको लेफ्ट वाले पार्ट में सेट कर लो। इधर हमने क्या सेट किया था? 96। इधर क्या सेट किया? 04। दोनों को मिला दो, कितना होगा? 9604। 9604। इज इट क्लियर? इफ यस प्लीज थम्स अप। वेरी गुड 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 गुड। किसी को नहीं आया तो बोल दो, वी विल रिपीट। क्लियर है, वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते थोड़ा सा और। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 102, ठीक है। 102। अब आप लोग बताइए 102 जो है वो 100 से कितना एक्स्ट्रा है? दैट इज 02, ठीक है। तो अब क्या करना है, जिस नंबर का स्क्वायर पूछा है अगर एक्स्ट्रा है तो उसमें क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे, ठीक है। 102 प्लस 02 कितना होता है? दैट इज 104। तो फिर से वही टास्क कि 104 को कर लो यहां पर सेट, हो गया सेट, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा था? 02। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 02? 04। तो 10404, 04 इधर सेट कर लेना है, और 10404 इज द स्क्वायर ऑफ 102। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में आंसर देना। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 96? क्विक। देखो आपकी ईमानदारी आपके पास में है, कहीं से करना नहीं है, अपने दिमाग से ही करना है। 9216, 9216, वेरी गुड। I'm asking 96. Very good, very good. Now the next one is, what is the square of 104? Please explain again. Mega, please wait. I am explaining again. हाँ सुनिए ध्यान से। सपोज करो हम लोगों ने नंबर लिया
103। 103 को मतलब 76 से लेकर 125 तक की रेंज का कोई भी नंबर होता है तो उसको कंपेयर किससे करना है, हमें हमेशा कंपेयर करना है 100 से। ठीक है, तो 103 लिया। 103 इज हाउ मच ग्रेटर देन 100, दैट इज 03। तो जिस नंबर का स्क्वायर पूछा है उसी में क्या कर दो, उसको ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये 100 से ज्यादा है। ठीक है, कम होता है तो उसी नंबर में से क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 103 है तो 103 में 03 ऐड करोगे कितना आएगा, दैट इज 106। तो 106 को इधर सेट करो। ठीक है, अब 103 100 से कितना ज्यादा आपको पता है 03, तो 03 का स्क्वायर कितना होता है 09। तो अब इन दोनों को मिला दो, दैट इज 10609। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस सर, ठीक है। अब आप मुझे बताइए फटाफट से, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 109 क्विकली। 11881 11881 11881। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। स्वीकृति, उदीप्ता, रिंकू, सबका आ गया आंसर, बहुत अच्छे, शानदार, तुम तो अच्छे बच्चे हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं ना। अब हम पिक करते हैं, सपोज करो हमने नंबर पिक किया 112। अब ध्यान से सुनना एक बार आप लोग, ठीक है, हल्का सा चेंज है बस केवल। 112 है तो रेंज वही 76 टू 125। ठीक है, तो 112 इज हाउ मच ग्रेटर देन 100? 12। वेरी गुड। आपसे स्क्वायर किसका पूछा है, 112 का, और 112 100 से ज्यादा है, तो 112 में कितना ऐड करेंगे, जितना वो 100 से ज्यादा है। तो 112 में कितना ऐड करोगे, 12। 112 में कितना ऐड करोगे, 12। 112 प्लस 12 दैट इज 124। तो 124 को यहां सेट करो पहले। सेट है सबके इधर राइट वाले पार्ट में? ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, यहां पे क्या सेट करा हमने, 124। 124 सेट किया, 124 सेट है, ठीक। 112 100 से कितना ज्यादा था, 112 is how much greater than 100? That is 12. What is the square of 12? 144। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर स्क्वायर 3 डिजिट का आए तो हमें क्या करना है, स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट यूज करना। तो 144 में से क्या यूज करोगे आप, केवल 44 अपने लिए यूज करोगे, और 1 कहां ऐड कर दोगे, जो हमने इधर की तरफ सेट किया था ना 124, उसमें 1 ऐड कर दो, दैट इज 125। और इधर क्या सेट है, 44। तो 12544 इज द स्क्वायर ऑफ 112। नाउ इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल, आकृति बिल्कुल सही, 12544। ठीक है, अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ चलूंगा अब मैं, क्योंकि हमने 76 से 125 तक की रेंज ली ना, तो अब हम रेंज लेते, सब सॉरी रेंज तो यही है, नंबर लेते हम 88। ठीक है, या 89 ले, 89 लेते, अब थोड़ा सा डिफरेंट है ना। 89 इज हाउ मच लेस देन 100? 11 11 11, वेरी गुड। तो अब ये ना 100 से कम है, तो हमको क्या करना है, जिस नंबर का आपसे स्क्वायर पूछा है उतना ही उसमें से क्या कर देना है, कम कर देना है। 89 माइनस 11 कितना होता है, बताइए फटाफट से। 89 माइनस 11, 78 78, वेरी गुड। 78, तो 78 पहले इधर सेट करो। सेट है, सेट है, वेरी गुड, ठीक है। अब इधर 78 सेट है आपको पता है व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? 121। अब 121 में से मैंने आपको क्या बताया कि स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट यूज करना है, तो आप यूज क्या करोगे, केवल 21। और 1 को कहां ऐड कर दोगे, जो यहां पे 78 सेट है ना उसमें 1 ऐड कर दो, तो 78 प्लस 1 दैट इज 79। और इधर क्या रह गया था, 21, दोनों को मिला दो, 7921 इज द स्क्वायर ऑफ, इज द स्क्वायर ऑफ 89। वेरी गुड, सीख गए आप लोग, 89। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बताइए लोग, आप लोग, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 86? सॉरी, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 86? आ गया, कई लोग आंसर आ गया, अनय, मुस्कान, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार।
7396, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्रुव बताएगा मुझे व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 113। ध्रुव बताएगा, ध्रुव, व्हाट इज द स्क्वायर हाँ ऑफ सर मैं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 113 3+15। विदाउट यूजिंग कॉपी पेन, विदाउट यूजिंग एनी हाँ हाँ कैलकुलेटिंग डिवाइस। सोचो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम ले लो, लेकिन दिमाग से करो। सर 12769। वेरी गुड। चैट बॉक्स में तो नहीं देखा ना? ना ना सर। क्या बात है, छा गए तुम तो, शानदार, वेरी गुड। ठीक है, नाउ देखो, आप लोगों को पता लग रहा नहीं 1 to 25 के स्क्वायर हमें क्यों आने चाहिए इस ट्रिक के लिए? हाँ ठीक है, और मैंने पिछले क्लास में आपको टास्क दिया था कि 1 to 25 तक के स्क्वायर याद करके लाना। कितने लोग याद करके लाए? पूछ लो किसी से भी। सुश्रुत तेंदुलकर बताएगा मुझे। सुश्रुत, सुश्रुत गायब हो गया। राजन कुमार, राजन भी गायब हो गया। सॉरी सर, नहीं पता मुझे। नहीं अरे नहीं, याद किया कि नहीं किया पहले ये बताओ मुझे। ट्राई किया था? नहीं सर। कहां तक आते हैं आपके स्क्वायर्स? 15 तक आते हैं सर। पूछ लूं? हाँ। 14 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 196। वेरी गुड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आप क्या करना सुश्रुत, 25 तक याद रखना, जिससे ना बहुत इजीली हम स्क्वायर कर पाएंगे जल्दी से आगे वाले, क्योंकि 25 हम्म तक याद नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी स्क्वायर। हम्म। ठीक है। यस सर। राजन, राजन अपनी मस्ती में मस्त है, उसको मतलब ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों को इसका मतलब ये है कि 26 से लेकर 125 तक के स्क्वायर आप टिप्स पे कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना? विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटिंग डिवाइस। सर 113 का मैं दोबारा बताता हूं अंजू आपको। 113 इज हाउ मच ग्रेटर देन 100? दैट इज 13। तो 113 में हम कितना ऐड करेंगे? 13। कर रहा हूं अंजू, कर रहा हूं। 113 में हम कितना ऐड करेंगे? 13। तो 113 में 13 ऐड करोगे कितना आएगा? 126। तो 126 को अपन कर लेंगे इधर सेट। कितना एक्स्ट्रा है? 13। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 13? दैट इज 169। तो 169 का हमें क्या करना है? हाँ, 169 में से 69 तो अपने पास रखो आप, ठीक है। और इधर जो 126 में 6 था उसमें 1 ऐड कर दो, तो 12769 इज द स्क्वायर ऑफ 113। हाँ, रिंग को, इस ट्रिक को अपन आगे तक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 तक ले जा सकते हैं इस ट्रिक को अपन। और ये चीजें काम कहाँ आती है मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या बोलते हैं, जैसे भी कोई भी एग्जाम होता है ना अपना, तो वहां पर जैसे बैंक पीओ के एग्जाम्स हो गए, कोई भी कैंपस रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि एक एक सेकंड की वैल्यू होती है। तो जब आप कैलकुलेशन, जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हमें है ना, तो वहां पे कैलकुलेशन में नीचे आ गया 48 का स्क्वायर। अब एक तो बच्चा है 48 into 48 कर रहा है, आप डायरेक्ट दिमाग लगा करते हो 48 का स्क्वायर 2304। तो वहां पे एक एक सेकंड की वैल्यू आपको पता लगेगा जहां कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। ठीक है, तो अब बाकी जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 26 to 125 तक के स्क्वायर हम सबको क्लियर है, हाँ या ना? और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। सर ये पूछ रहे हैं मुकेश भाई जी, मेडिटेशन करवाएंगे क्या? कैलकुलेशन क्वेश्चन में स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन आल्सो अदर क्वेश्चंस आर हेल्पफुल। हाँ बिल्कुल। और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। नहीं है सर किसी को डाउट में भी? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करवाने वाले हैं? सर हम नंबर सिस्टम का एक टॉपिक लेंगे यूनिट डिजिट से रिलेटेड। नंबर यूनिट डिजिट।
वाह, चलिए, तो हम मेडिटेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, सिर्फ 3 मिनट, क्योंकि मेडिटेशन की एक प्री रिक्विजिट समझ लें। उस प्री रिक्विजिट पे बात करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। और मेडिटेशन की प्री रिक्विजिट है, वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार। हमें ये पता होना चाहिए कि थॉट जनरेट कहाँ होते हैं। थॉट्स मन में जनरेट होते हैं, और 4 प्रकार के थॉट्स जनरेट होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी थॉट्स। ये जो चारों प्रकार की थॉट्स जनरेट हो रही है माइंड में, और इंटेलेक्ट इन सारे थॉट्स पे डिसीजन देता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले हमने समझा माइंड, दूसरी चीज आ गई पिक्चर में, इंटेलेक्ट। माइंड ने थॉट्स जनरेट करके दिए, इंटेलेक्ट्स ने उन थॉट्स पे डिसीजन लिया, और इंटेलेक्ट जो काम डिसीजन लेके बार बार करता जाता है वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। बस इतनी सी बात यदि याद है तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं। दोबारा समझ लें 3 इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एक बात बताएंगे आप सब लोग, मेडिटेशन कौन करता है? ये जो सामने शरीर 6 फुट का दिखाई देगा, ये मेडिटेशन करता है, या इसके अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा विराजमान है, वो मेडिटेशन करेगी? मेडिटेशन कौन कर रहा है? ये शरीर जो दिख रहा है वो कर रहा है, या इसमें एक सर सोचने वाली शक्ति बैठी है वो करती है? जी ध्रुव जी। सर सर जो आत्मा है, मतलब जब वो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, मतलब जैसे कि मैं पहले से ब्रह्मा कुमारी का पार्ट हूँ, तो मतलब मैं सेंटर जाता था, तो वहाँ पे मैं करता था, तो मतलब मैं हमने मेरे हिसाब से जो आत्मा है वो परम धाम जाके मतलब बाबा की शक्ति से खुद को शुद्ध करती है और दूसरों को भी शुद्ध करती है, इसलिए मेडिटेशन करते हैं हम लोग। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि मेडिटेशन करने वाली एक शक्ति है, एक एनर्जी है जो मेडिटेट करती है। और वही एनर्जी है जिसे हमें प्रशांत सर हमें बता रहे थे कि वो इमॉर्टल है, वो अविनाशी है। ये जो दिख रहा है ना, ये विनाशी है, लेकिन ये चैतन्य शक्ति जो चलाने वाली है ना, वो अविनाशी है। वही चैतन्य शक्ति जाके फिर दूसरा जन्म लेती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरा लेती है, ये हमने समझा था। तो कल आपको एक स्पेशल प्रैक्टिस करनी है, कल नहीं, अगले 7 दिन बाद जब हम दोबारा जुड़ेंगे तो एक स्पेशल प्रैक्टिस करनी है। कौन है हम? इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति, एक ऊर्जा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। यानी कि इस पूरे शरीर में क्या देखने की प्रैक्टिस करेंगे? यहां पर एक सितारा विजुअलाइज करेंगे, और वही वो सितारा है जो इतने बड़े शरीर को चला रहा है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, पहला आधारभूत सिद्धांत है मेडिटेशन का, कि मेडिटेशन करेगा कौन? मन करेगा, क्योंकि मन में सोचने की शक्ति होती है। मन सोचता है, बुद्धि निर्णय करती है, और जब मन और बुद्धि से बार बार हम करते जाते हैं वो संस्कार बनते हैं। इस चीज पे हम अगली बार फिर आपसे डिस्कशन करेंगे। पर 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड, 35 सेकेंड के लिए, जहां भी है आप सीधे होके बैठ जाइए, और मेडिटेशन का पहला स्टेप ये करिएगा कि अपने आप को मस्तक के मध्य एक चमकता हुआ सितारा समझना। पहला स्टेप है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये सोचना है कि जहां पर ये तिलक लगाया जाता है, वो तिलक, एक्चुअली तिलक तो बाहर लगाया गया है, लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो वहां एक चमकता हुआ सितारा है। 30 सेकंड के लिए बस। रिलैक्स। ये प्रैक्टिस अगले 7 दिनों तक दिन में 5-5 बार करना।
ये कंसंट्रेशन का पहला लेवल है, मेडिटेशन नहीं है, मेडिटेशन तो अभी सीखेंगे, पर ये मेडिटेशन का पहला कदम है कि मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, चैतन्य बिंदु हूं। बस केवल इतनी सी प्रैक्टिस दिन में 5-5 बार अगले 7 दिनों तक। ठीक है, अच्छा। अभी हम अजय स्वर्णकार जी का भी बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं आपकी शानदार ट्रिक्स के लिए, और अगली बार फिर बहुत सारी ट्रिक्स हमारे साथ लेकर के आएंगे आप। और तब तक के लिए जाने से पहले एक सुंदर गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। एक हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करेंगे एक सुंदर सा गीत हम सब के लिए, जो कि हमें मेडिटेशन में हेल्पफुल हो। जरूर। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आप सबके लिए एक विशेष सूचना है, YWC यानी कि यूथ राइटर्स कॉन्टेस्ट, आप सबको याद है, इसके लिए बहुत सारी एंट्रीज आना शुरू हुई हैं। आप सब लोग भी अपनी एंट्रीज देना मिस नहीं करना। 5 टॉपिक थे, आपको याद होंगे। यूथ राइटर्स कॉन्टेस्ट में अपनी एंट्री देना मिस ना करें। सब लोग देने वाले हैं ना? एक बार रेज हैंड करेंगे, सब लोग देने वाले हैं YWC में अपनी एंट्री? अच्छा, वेरी गुड। सृष्टि पलक जी, सृजिता जी, वेरी गुड। अनय सिंह जी, सुश्रुत तेंदुलकर जी, राघव राहेजा जी, ध्रुव गोहेल जी, गैलेक्सी टैब से कुछ जुड़े हैं वो। आप सब लोग, आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा जब रिजल्ट अनाउंस होंगे, इसलिए सब लोग कोशिश करना कि इसके अंदर अपनी एंट्री जरूर दें। और अगले संडे फिर एक नई हस्ती के साथ में पावर टॉक में मुलाकात होगी, और वैदिक मैथमेटिक्स को भी हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रशांत जी का भी, डॉक्टर अजय स्वर्णकार जी का भी, और साथ साथ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स का भी। टेक्निकल टीम में गौरव जी और बुरहान भाई जी और शिविका दीदी भी हम सबके बीच में आज किसी वो विशेष काम से बाहर गई हुई है, आज है नहीं, लेकिन अगली बार आप सबसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।